Well, hello everyone. Good morning. Welcome to Sriya Institution. In this video, we are going to talk about the basics of English tense. Without any, let me tell you one thing that in this video, I'm just covering the basics of tense. It is not a proper advanced lecture on the tenses. It is just a basic tense where I would just tell you, how to find the sentences, whether they are in simple present or whether they are in future continuous or future progressive tense or past perfect continuous tense. So without wasting any further time, let's get started. So the first the first tense that we are going to look into is that simple tense. Now one thing that I would like to mention to you all is that tense, as we all know, represents a time in a sentence. Well, actually tense just does not represent a time in a sentence. It also represents an action in a sentence. So you have to keep two things in mind. One is that tense represents a time, and second, that tense usually represents action in a sentence. So now let's look into the first sentence. He loved football. Here, if you see the word loved, now this usually is used in past tense. We all are, as the name itself suggests, simple. It is quite easy to find these tenses in a sentence. Now there are some ways that if we have if you are representing an habitual action, it comes under present tense. If we are representing an action that happened in past, we use it in past, or some action that will happen in future, we use it in simple future tense. We will look into the detailed video as well, but for now I'm just covering the basics of the tense. So I hope the basic concept would be clear for you, so that we can go for the advanced version as well. So here, he loved football. Obviously it's simple past because you have loved, यानी कि उसे पसंद था. Next, he loves football. In this sentence, if you look, the word loves represents कि उसको पसंद है football. So in that case, it becomes simple present tense. He will love football. अब यहाँ पे obviously will आया है, तो you will all guess that it's a future tense. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये कि हम अक्सर सुनते हैं कि will और shall जो है future tense को represent करता है, but in some exceptional cases will और shall हमेशा future tense को represent नहीं करते. They are just a building block for future tense. उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इन आवर एडवांस्ड वीडियो. एंड अभी ये सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट, आई होप इट इज क्लियर. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हिच इज कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस इन इंग्लिश ग्रामर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस इन इंग्लिश ग्रामर. नाउ प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली मींस एक्शन दैट depicts a period, or in simple words, एक्शनर एक टाइम को डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस. सो नाउ लेट्स लुक इनटू द सेंटेंसेस. नाउ हियर द फर्स्ट सेंटेंस, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल. अब यहां पे जो एक्शनर है वो है ही. ये ही जो है इसका एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है कि ही जो है फुटबॉल खेल रहा है. वाज यहां पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो टाइम यहाँ पे was है, तो इसलिए ये हो जाता है past tense. So in short, he was playing football. यहाँ पे ये जो sentence है ये हो जाता है past. Now one thing that you have to note is that basically in past tense the action is completed or not. There is no assurity. एक action खत्म हो चुका है या नहीं हुआ है, उसकी कोई assurity नहीं है. ये जरूर पता है कि action शुरू हो चुका है past में, लेकिन ये नहीं पता है कि खत्म हो गया या नहीं. सो एक और एग्जांपल लाइक ही वाज ईटिंग योर लंच बॉक्स और ही वाज ईटिंग योर लंच. यानी कि जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अरे तुम्हारा लंच वो खा रहा है, वो खा रहा था, तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा लंच वो खा रहा था, ऐसे में इट रिप्रेजेंट्स अ पास्ट एक्शन. अब यहां पे उसने लंच खत्म कर दिया तुम्हारा या नहीं, there is no assurity. मुझे नहीं पता, ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है. There is no assurity. So in that case, it represents a past tense. Now let's look into the second sentence. That is, he is
प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे सेम थिंग, ही जो है एक्शनर है, इस एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फुटबॉल जो है वो एक एक्शन है, यानी कि इसके एक्शन ये है और ये अभी चल रहा है, यानी कि वो अभी फुटबॉल खेल रहा है। ही इज ईटिंग योर लंच और यू आर हैविंग योर लंच। ऐसे में या ऐसा सेंटेंस जो अभी की टाइम के या अभी प्रेजेंट में बोलते हैं कि अभी वो ये कर रहा है, तब वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स लुक इनटू द थर्ड सेंटेंस, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल यानी कि वो फुटबॉल खेलेगा। सेम थिंग, ही एक एक्शनर है और फुटबॉल जो है एक्शन है। अब यहां पे इस एक्शन को कब किया जाएगा ये बताने के लिए ही यहां पे इस, वॉज और विल का रोल है। और विल और शैल जैसे बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फ्यूचर टेंस के, सो दे रिप्रेजेंट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। So I hope the concept of progressive or continuous tense is clear to you. Now let's move to the perfect tense, which is a bit complex. Now let's look into the perfect tense. Now perfect tense usually means result of an action that are happening, will happen or have happened with respect to time. In simple words, if I have to tell you that if you want to find perfect tense in a sentence, the one and the simple method that I usually follow and recommend is that you have to take a reference point in a sentence, just like you do in mathematics or any other science related subject. A reference point or a starting point or anything which you might like to call it. Now here you have to take a reference point, and that reference point will be the reference of time. Now one thing that you have to remember in the perfect tense is that doesn't matter the tense is in present perfect tense or future perfect tense, all the tense of the perfect form will start from past, यानी कि जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हो चुका होगा और वो फ्यूचर में आके रुकेगा, या प्रेजेंट में आके रुकेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और फ्यूचर तक कंटिन्यू होके रुकेगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सेंटेंस देखते हैं तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ he had won 5 matches until that day. Now here he had won यानी कि उसने 5 मैच जीत लिए होंगे, यानी कि एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हो चुका है और पास्ट में ही खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट जो मैंने बोला था, रेफरेंस ऑफ टाइम, दैट डे, अंटिल दैट डे, यानी कि उस दिन तक उसने 5 मैच तो जीत ही लिए होंगे। जब हम एक रेफरेंस पॉइंट पास्ट के ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स लुक इनटू द सेकंड सेंटेंस, he has won 5 मैचेस सो फॉर। यहाँ पे 1 मैंने शायद छूट गया लिखना, नो प्रॉब्लम, बट आप इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। he has won 5 मैचेस सो फार। नाउ हियर, अब यहां पे ये जो मैंने बोला था कि चाहे सेंटेंस प्रेजेंट का ही क्यों ना हो लेकिन वो स्टार्ट पास्ट से हो जाएगा। यहां पे इफ यू सी, ही हैज वन 5 मैचेस, यानी कि उसने जो मैच जीतने की प्रक्रिया है शुरू कर दी है। ही हैज वन 5 मैचेस, यहां तक ओके कि भाई ये पास्ट नहीं हो रहा है। सो फार, अब ये आ गया जो मैंने बोला था रेफरेंस ऑफ टाइम। सो फार यानी कि अभी तक उसने 5 मैच जीत लिए हैं, अभी तक, तो इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स लुक इनटू द थर्ड सेंटेंस, ही विल हैव वन 5 मैचेस बाय दैट। अब यहां पे उसने जो मैच जीतने की प्रक्रिया है, 5 मैच जीतने की, वो शुरू कर दी है और शायद अगले हफ्ते तक वो 5 मैच जीत भी जाएगा। जब हम बोलते हैं कि वो जीत भी जाएगा, यानी कि 1 हफ्ते बाद शायद वो एक्शन हो या 1 महीने बाद भी हो, लेकिन वो हो जाएगा, होगा जरूर, चाहे वो अगले हफ्ते हो, अगले महीने हो, 6 महीने बाद हो, जब भी हो। सो इन दैट केस इट बिकम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So I hope the concept of future perfect tense is clear for you. Now let's move towards the future, the present, or so in basic words,
perfect continuous tense. Now let's look into the perfect progressive or perfect continuous tense. Now perfect continuous tense usually means a duration of the action. जब हम सिर्फ परफेक्ट टेंस के बारे में जान रहे थे तब हमने देखा था कि रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, और यहाँ पे जब प्रोग्रेसिव लग जाता है तो वो बन जाता है ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जब मैंने कंटिन्यूअस टेंस तुम्हें बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि ही का एक्शन को डिनोट कर रहा है वो सेंटेंस. तो इन दैट सेम गोज हियर दैट द सेंटेंस एक्चुअली आल्सो रिप्रेजेंट्स the duration of he. Now let's look into the sentence, it will be clear. He had been playing football for 10 years. Now the one thing that you have to note is that कि reference of time हमें यहाँ भी लेना ही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे perfect tense भी आ रहा है. He had been playing football for 10 years. अब यहाँ पे he की बात हो रही है कि वो फुटबॉल खेल रहा है 10 साल से. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग कि उसको 10 साल हो चुके हैं फुटबॉल खेलते. ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन. इन दैट केस व्हेन यू से कि ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही हैड बीन एन वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर, इन दैट केस इट बिकम्स कि वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यहां पे ड्यूरेशन के साथ साथ उस एक्शन का एंड भी हो रहा है. He had been playing for football for 10 years और अब वो नहीं खेल रहा है. Now let's look into the second one. He has been playing football for 10 years. यहाँ पे he has been playing यानी कि वो एक्शन तो सेम कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे has been और 10 years का जो ड्यूरेशन मेंशन्ड है वो देखते हैं तो ये होता है कि वो उसको 10 साल हो चुके हैं खेलते हुए और वो अभी भी खेल रहा है फुटबॉल. So in that case it becomes present perfect progressive tense or present perfect continuous tense. Now let's look into the third one. He will have been playing footballs for 10 years. अब यहाँ पे कि ये है कि भाई by next week और by next month उसको 10 साल हो जाएंगे फुटबॉल खेलते हुए. तो in that case it becomes future perfect continuous tense. बट बाय द वे ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं. ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं. ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत कम इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं. सो आई होप the concept of tense, basic tense is clear for you, and this video will definitely help you to understand the advanced version of the tense. So I hope the basic tense is clear for you. I hope I am able to make a clear understanding of tenses in your mind. So with that said, I would like to thank you for watching till now. If you like this video, please do give it a like and please comment down below how you felt the video, and if you want me to cover any other topic related to grammar, we will look into that as well. And apart from that, this video will also help you on my next coming video, which will be on the advanced learning of tense. So thank you so much and